Why so serious? अरे 2017 न्यू ईयर न्यू बिगिनिंग्स, अब तो कम से कम सीरियस होना छोड़ दो. नहीं क्यों? Because we carried the same shit and the same people into the new year. That's why. अरे यार, that's actually true. If only we could change the people as well as the year changed. तब मजा आता, तब हैप्पी न्यू ईयर एक्चुअली होता. But talking of people, lots of these person of the year lists coming out. You know, these POTY lists. You know, they decide who made the most impact on a country or on the world for good or for bad. Some say it is easier to get into the list if the impact is bad. Now see, this year's Time shortlist for the person of the year. Putin, Trump, Androgen, Modi, Hillary. POTY list कम लग रहा था, पॉटी लिस्ट ज्यादा लग रहा था. अच्छा काम किया या नहीं इसका तो पता नहीं. But lots of pooping happened in 2016 and the cumulative mess created quite a stench. So we here at News Laundry thought it would be a better idea to create an award of our own called the Person of the Tabahi Year, जिसने सबसे ज्यादा तबाही मचा डाली, and call it the Potty Award and give it to the person who did no work and managed to create the maximum amount of raita and gand in 2016. And boy, did we run into a laundry list of candidates for this very prestigious award. अब देखिए ना, पहलाज निहलानी जी, जेम्स बॉन्ड आज तक किसी से नहीं डरे होंगे, लेकिन नो किसिंग इन फ्रंट ऑफ आवर CBFC चीफ. Only for 7 seconds. संस्कारी तो सबको होना चाहिए. या फिर देखिए उनके भक्ति वीडियोस मोदी जी के लिए, या 94 कट्स ऑफ उड़ता पंजाब. सर्टिफिकेट हमने जरूर दिया है, लेकिन जहां फिल्म देखने का सवाल है, मैंने बिल्कुल नहीं देखी है फिल्म. क्या कैंडिडेट थे, राइट देयर वेटिंग टू विन दिस अवार्ड. लेकिन उसी समय आ गए हमारे अमर सिंह जी. जहां गए, जिससे जुड़े, जिससे हाथ मिलाया, जिसको जादू की झप्पी दी, उसका हो गया कलेश, उसका हो गया स्प्लिट. मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी के भी पिता हैं और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भी पिता. अमर सिंह बिगेस्ट पनौती ऑफ 2016. लेकिन फिर हमें दिख गई स्मृति ईरानी जी. HRD मिनिस्टर तो थी नहीं, वो तो थी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. took us to a virtual war with JNU and the student community of India. सर करम करके आपके चरणों में छोड़ देंगे अगर मेरे जवाब से आप असंतुष्ट हो. स्मृति ईरानी, serious contender for melodramatic potty awards. But the potty of the year goes to none of the above. Well, they have done their bit, but there was no other person who spread as much confusion, as much mess, bitterness, misinformation, hate as this man. हमने जिंदगी में कभी हारना नहीं सीखा है. इसे थप्पड़ की गूंज याद दिलानी है मुझे. और हमारी मुलाकात होगी, कई बार होगी. अनुपम खेर जी ने जितनी पॉटी अपने एंटायर विलेन करियर में नहीं किया होगा, उतनी उन्होंने 2016 में कर डाली. And what makes him win this award is not his blind bhakti, but the fact that he is capable of saying something and doing something completely the opposite. Take for instance, he is lashing out at Pakistani artists post the terror attacks and suggesting that they shouldn't be employed in Bollywood in the future because India comes first. We wish the Pakistani actors and actresses should condemn the act of terrorism towards Indian soldiers getting martyred and not be quiet. The films that have already been made, I think we should peacefully let them release. But in the future, I think that our people need to be more careful and less so-called liberal in their thinking. It's very important to think what comes first. And in my thinking, India always will come first. Wah, Deshbhakt Anupam Kher ji, doing his bit to get Fawad Khan kicked out of India. But ये कौन है? सुंदरी. Oh, famous Pakistani model and aspiring actress Saima Azhar, who was training in Anupam Kher ji's school, Actor Prepares, at the same time when Anupam Kher ji was lashing out at Pakistani artists. Now, here's the interesting part. Unlike Fawad, she wasn't thrown out by Deshbhakt Kher. She wasn't even made to apologize for the Pakistani terrorists. तब तक शायद full course payment ले लिया था. Azhar, as a matter of fact, finished her course as late as December 2016 from Actor Prepares. All this while Mr. Kher was blasting out against Pakistan. It's very important for all of us to come together when there are problems, when the enemy attacks us, they kill our soldiers. कम से कम इतनी संवेदनशीलता तो दिखाइए कि आप टेररिज्म को अटैक करिए. As an individual, they are very nice people.
But when it comes to collective responsibility of the country, you cannot be diplomatic. अमेजिंग स्टफ. सिलेक्टिव नेशनलिज्म कोई सीखे तो अनुपम खेर जी से सीख लीजिए. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, खेर सर, आपसे एक आइडिया है. सिलेक्टिव नेशनलिज्म का भी एक कोर्स कर डालो एक्टर प्रिपेयर्स में. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारा पेमेंट मिल जाएगा आपको. लेकिन selective nationalism is not the only reason why Kher wins our very prestigious Potty of the Year award. His ability to be a real villain in real life sets him at a completely different league. Dr. Dang creates war. In June 2016, he shared an undated picture of dead bodies of Kashmiri Pandits on Twitter and wondered why was there no media outrage over this? सोशल मीडिया पे बात सामने आई कि भाई ये पिक्चर तो 1990 वाला है, तो खेर साहब को खूब सारे जूते पड़े. उन्होंने क्लैरिफाई करके ये कहा कि भाई आउटरीच की कोई एक्सपायरी डेट थोड़ी ना होती है. भाई वेरी स्मार्ट वर्ड्स, बट नेवर माइंड, सच अ सेंसिटिव पिक्चर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट could have caused further violence. So, well played, Dr. Dang. Well played. Then there was JNU. Anupam Kher's moment in the sun, lashing out against Kanhaiya Kumar. जैसे कि पाकिस्तान से ज्यादा डेंजर तो इंडिया को एक बिहारी स्टूडेंट से है. Kher's lack of political knowledge also showed when he proclaimed that a person out on bail cannot be felicitated like a hero. He was of course referring to Kanhaiya, while forgetting that Amit Shah ji from his beloved BJP had been made the BJP president for the very first time when he was out on bail. हीरो हमारे लिए वही होगा जो देश के लिए अच्छी बात करेगा. जो देश के विरोध में बात करेगा वो हमारा हीरो कैसे बन सकता है? कैसे इस यूनिवर्सिटी के लोग एक ऐसे इंसान का अभिनंदन कर सकते हैं जिसको जमानत मिली है? जमानत से जो वापस आए वो ओलंपिक हिंदुस्तान के लिए जीत के नहीं आया है. अमित जी को देख के चौंक गए. अरे डिस्क्लेमर, वो वाला पार्ट हमने लगाया है. बट द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री 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 खेर जी इज एडिंग टू द लेक्सिकन ऑफ इंडिया, दैट सोल्जर्स एट द बॉर्डर. सो डोंट यू डेयर क्वेश्चन. एटीएम लाइन लंबी, सोल्जर्स एट द बॉर्डर. ट्रेन एक्सीडेंट्स में लोग मर गए, सोल्जर्स एट द बॉर्डर. Poor are dying due to no night shelter. Soldiers are surviving in -50 degrees. Soldiers at the border. कोई भी प्रॉब्लम ले आओ बॉस, उसका सोल्जर एनेक्डोट जरूर होगा खेर जी के पास. एक जमाने में जब माँ रोते हुए अपने बच्चे को बोलती थी, बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा. अब वही मां बोलेगी, अब सड़े हुए बच्चे, वहां सोल्जर्स 1 घंटा सो नहीं पाते और तू यहां सोने से मना कर रहा है. सोल्जर्स एट द बॉर्डर, सो जा. सो सोल्जर्स एट द बॉर्डर इज द न्यू. तो जानता नहीं है मेरा बाप कौन है. It is the new children are starving and dying in Africa. It's the new खुदा से डर. It is the new what about Malda? What about 1984? What about the time when Ross cheated on Rachel? Because they were on a break. And everything else that you can think of. Every question, the answer rolled into one. Soldiers are at the fucking border. Soldier, soldier, मीठी बातें बोलकर. Soldier, मीठी बातें बोलकर दिल तू चुरा ले गया. Now, seriously, the next time you use that soldiers at the border analogy, just take a moment. Take your brain out of that locker that you've put it in. Put it on and think. Because you're doing a greater disservice to our soldiers at the border than anyone else by using that argument to lay a guilt trip on a clear partisan issue. Not only is this soldier at the border a very distasteful, exploitative and lowbrow argument, it's also not very intelligent or logical. So avoid, guys. But for the man who has used this one line to milk every political issue, to twist it into soldiers at the border binary, since the government didn't give you either the FTII directorship or the Rajya Sabha seat, we hope our prestigious Person of the Tabahi Year is a suitable recognition of your immense contribution to the stinking discourse politics has become. Oh हाँ, by the way, अगर आप भी मुझे कोई अवार्ड देना चाहते हो तो like जूते, चप्पल, टमाटर वगैरह, और या फिर तानेज लाइक सोल्जर्स एट द बॉर्डर, प्लीज लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और सोल्जर्स के बारे में बात करते करते, उनके बारे में सोचते सोचते सब्सक्राइब बटन भी प्लीज क्लिक कीजिए. If you like that,
Click here to support us and down here to subscribe to our YouTube channel, and do check out the other stuff we do like News Laundry interviews, Why So Serious, animations, comics, panel discussions, podcasts which are really big, and much, much more.